अभी तो हम लोग दूर हैं, अभी हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और आप लोग का इसी से मैं तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं तो मैम म्यूट कर दीजिए, मैम वो बात कर रहा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इस क्लास का क्या वैल्यू है? यू जस्ट टेल मी। आप तो कम से कम चुपचाप रहिए, आप तो कम से कम शांत होकर के सुनिए, लगे कि हाँ वो बच्चा शांत है। ऑल ऑफ यू स्टार्ट टू टॉक, सब कोई एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आई एम गोइंग टू म्यूट ऑल ऑफ यू एंड ट्राई ऑल ऑफ यू ओपन योर, सारे लोग अब अपना कॉपी पेन खोलेंगे। We will continue the question answer of yesterday. That is the media, the mainstay of the democracy. Before starting the question answer, I am going to do one thing, and that is the important points of the lesson. Media, the mainstay of democracy, lesson 20. The important points are: media refers to various means of communication that helps in communicating to a large number of people at the same time. Radio, television, cinema, newspapers, magazines, and internet are all means of communication. The print media. Now come to the print media. The print media has changed tremendously. The latest technology help media to reach out to the masses. Next point is Chinese influenced the development in the field of printing to a large extent. They invented paper. The German printer Johannes Gutenberg is credited with the invention of the first printing machine with a type mold. Gutenberg brought out the first printed Bible. I'm discussing only the important points of the lesson because I have already explained you, and yesterday I've given you the question answer, and today we will continue the question answer. And so please, I'm just repeating. I will repeat the question answer also. And we have left, yesterday we have left E, 3, 4, and 5. Today we will complete it. Okay? So please be attentive and open your books, pen and copy. Okay? And start writing when I will say you. But here I am discussing only the important points. So please listen it carefully and learn it. I have already posted the lesson in the PDF form, and again I will post it the chapter in your WhatsApp group. So please, those who don't have the book need not to be worried, but you need your attention. If you are not that's okay, but you need your attention. थोड़ा कमी है नहीं पार्टी सॉन्ग तो ये हु इज टॉक हम देखना चाहते हैं कौन कौन बात करता है, एंड दैट्स व्हाई अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कंडक्ट द क्लासेस. ओके, सो बी सीरियस और थोड़ा तैयारी तो जरूर करिए. ऐसा थोड़ी होता है कि आप लेकर मोबाइल बैठ गए बात सिर्फ बात करते चले जा रहे हैं. नाउ कम टू द पॉइंट. लेसन 20. In electronic media, television is very important for a number of reasons because it is both audio and visual. Cable and satellite network. Now again come cable and satellite network the connectivity in rural on one hand media how the money the studio require constant service at this need all this needs a lot of investment, hence television channels and newspapers are owned
or are supported by big business houses. It is a powerful tool in the hand. Media and democracy are each other, and media is the main source of information in a democratic country. The information helps the citizens to form opinion, learns about the working, plans, and implementation of failure. And only then it helps us to. The main point is this: that it helps us to make a decision, or to take a decision, or to after watching all the activities which the government is doing. Television and newspaper, the print media, it is easily available as on the lasting impact on the people. लोगों पर ये print media जो छप कर आता है उसको print media कहते हैं, और it has a lasting impact on the people. Its readership has increased with effective and appealing pictures, cartoons, graph, map, etc. Next है, television and radio make the rural illiterate masses aware of the latest happening in their region or on the country on the whole. Indian cinema has also played an important role in creating awareness or social evils, political malpractices, economic, the fast change, the ever increasing the viewers for the information, along with a number of regional channels. It is very important that the information provided by media is balanced and impartial. In 1857, the British government passed the Gagging Act. Gagging means, again, to prevent someone from speaking freely. And when India got freedom in the year 1957, what will happen? The government has given the freedom of speech, but there are certain limitations on it. That is the we should not speak that पे बहुत फ्री होकर के नहीं बोलना है. This types of मतलब certain points has been included in the right to freedom of speech. So next, in 1857, the British government passed the Gagging Act. What is censorship? One point is also come in the lesson, that is the censorship. Censorship मतलब censor मतलब रोक देना, किसी भी न्यूज को आगे आने से रोक देना. So that is media को ऐसा किया कुछ भी लिखना चाहते हैं, if you want to write something, write freely, you will be punished. This was happened in our country in the year 1975 when emergency imposed in our country. The next, there is a Mazdoor Kisan MKSS, that is an NGO, an organization, and it has got it wanted to an information from the bureaucrat, but the building was completed, but in practical it was not completed. There walls without roofs, playgrounds without equipments, or community hall without any facility. So they needed the MKSS needed some information regarding the completion of the building, but they were not getting proper information. That's why they have done some effort, and the government of India has passed some Nation Act 2005. According to this act, we will get information through the regarding official or bureaucrat, that he or she is bound to give us answer within 30 days. If he or she is unable to provide us the right answer, they will be punished, or they तो इसलिए तो it has the right to information has empowered the general citizens to get proper information which was unavailable for them on the name of or on the name of bureaucracy. These types of security और bureaucracy का मतलब समझ लीजिए आपको
मान लीजिए कि हमने कहा आपको कोई इंफॉर्मेशन, हम कहते हैं कि ओ नो, आई एम नॉट प्रोवाइड, आई विल नॉट प्रोवाइड यू दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द नेशन, दिस आर द सिक्योरिटी. But children, one thing that is we should have to remember that the to get proper information is the right of every citizen in a democratic country. That's why our government has made it, has passed the Right to Information Act of 2005. And now uh, come to the keywords again. Next, taking responsibility for after that, gagging to prevent someone from expressing, speaking freely, किसी को बोलने से रोकना. Infanticide, ये कोई हमसे पूछा भी था. Infanticide, death of infant children too young. तो पब्लिक परसेप्शन, लोगों का व्यू क्या होता है. द वे जनरल पब्लिक थिंक अबाउट सम इश्यूज, इसी पर सोचना. ट्रांसपेरेंसी, विजिबल टू ऑल और नॉट हाइडिंग द फैक्ट. Unbiased, not favoring someone, not being unfair. That is unbiased. Watchdog, the one who makes sure that people in authority do not misuse their power. Now, children, I am going again to repeat the question answer. That is the take the correct option. That is the one C. नंबर 1 का सी होगा. ए, ये ए कहाँ बता रहा है. नंबर 3 का भी सी होगा. नंबर 4 का ए होगा और 5 का भी ए होगा. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है इंफॉर्मेशन. Fill in the blanks. I'm not reading the whole sentence. I'm giving only the correct word to you, and I posted it in my video also. So please, अगर आज भी ये वीडियो तो आप लोगों तक जाएगा ही, आप लोग इसके थोड़ा ध्यान दे देंगे. And the lesson I have already posted you. Today again I will post you the lesson. Number 1 information, number 2 printing, number 3 opinion, number 4 favor, number 5 transparency, number 5 transparency, number C write true or false for the following statement. A true, B true, C true, D false, E false. Number 4 D, answer the following questions in brief. Define media. जो लोग कल लिख लिए थे उनके लिए ठीक है, जो नहीं लिखे थे, जिनका छूटा हुआ है, वो फिर से थोड़ा ध्यान दे देंगे. Define media. Media refers to various means of communication that help in communicating to a large number of people at the same time. Media refers to various means of communication that help in communicating to a large number of people at the same time. Number 2, question number 2. Why is media called a watchdog of democracy? Answer, media is like a watchdog in a democracy that keeps the government active and the people involved. Why is media called a watchdog of democracy? Media is like a watchdog in a democracy that keeps the government active and the public involved. Now, question number 3. In what ways does the Chinese affect our views? Cinema. In what ways does the cinema affect our views? Not Chinese, it is cinema. Some films impart, answer बोल रहे हैं, some films impart important messages about social evils, political malpractices, economic exploitation, and the fast changing Indian society and have great impact on us. Okay. What are the different means of print and electronic media? Newspaper, magazines, cartoons, graphs, maps, cinema, television, radio, and internet, etc. are the different means of print and electronic media. Again, और हर name के बाद comma लगाएंगे, इसको ध्यान देंगे और लगाना भी आगे भी जब भी लिखिएगा
What are the different means of print and electronic media? Newspaper, magazines, cartoons, graphs, maps, cinema, television, radio, and internet, etc. are the different means of print and electronic media. That is the answer. What other basic rights are linked with the right to information? What other basic rights are linked with the right to information? The right to information is closely linked with our basic rights, such as freedom of speech and expression and right to education. Question: what other basic rights are linked with the right to information? Answer: the right to information is closely linked with our basic rights, such as freedom of speech and expression and right to education. This is the D5. The answer was of D5. Next आपका है answer the following question, that is E. Yesterday we have done. How are media and technology dependent on each other? How are media and technology dependent on each other? Media and technology are dependent on each other, as on one hand, technology has improved the efficiency of media, and on the other, media updates us on the advances in technology. मीडिया अपडेट सच. अब इसका जैसे क्या कहता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, फिर से एक बार पहले देख लीजिए, तब मीनिंग आप लोग को हम अलग से समझाएंगे. हाउ आर मीडिया एंड टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? Media and technology are dependent on each other, as on one hand, technology has improved the efficiency of media, and on the other, media updates us on the advances in technology. मतलब जो नया होता है कि मीडिया अपने और उसके अब ये हुआ कि एक तरफ क्या होता है कि मीडिया जो है टेक्नोलॉजी से अपने आप को एडवांस कर रहा है और उस एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों को बताता है. तो जब बताता है तो वी स्टार्टेड टू यूज दैट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि मीडिया एक तरफ जो है टेक्नोलॉजी को अपडेट करता है और दूसरी तरफ हम लोगों को बताता भी है. दैट इज द मीनिंग ऑफ मीडिया. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर डेली लाइफ? अब कहता है कि मीडिया किस तरह से हमारे डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है. दैट इज मीडिया इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इट हेल्प्स द सिटीजन्स टू फॉर्म ओपिनियंस, learn about the working plans and programs that the government is undertaking, their successful implementation or failure. अब कहता है कि मीडिया जो है सबसे मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन का. अब फिर से देख लीजिए, हाउ डज मीडिया इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ? हमारे डेली लाइफ को मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करता है? सिटीजन्स टू फॉर्म ओपिनियंस, लर्न अबाउट द वर्किंग प्लान्स एंड प्रोग्राम that the government is undertaking, their successful implementation or failure. Is it clear to all? Next question number 3. ये जो हम लोग अभी तक लिखे हैं ये हम लोग कल तक लिख लिए थे. Now question number 3. So please write the role of media in our democracy. Yesterday or every day I'm telling you one thing, children, or that is to try to write the answer by yourself. Why I dictate you? Just I want to encourage you to write the right question and its answer. If you are understanding the question well, properly, then you will write the proper answer also. But most of you do not understand the question. Most of you do not read the question properly. पढ़ोगे तो समझ भी लोगे, लेकिन most of you avoid the question. In the classroom also, whenever I give you to
learn the question answer. Some students come to me, they learn the answer only. They do not know what is the question. They come to me and say, मैम क्वेश्चन पूछिए ना, हम बताएंगे. लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है बच्चा समझता ही नहीं है, या क्वेश्चन को अवॉइड करता है, जो कि आपको नहीं करना है. आप पहले क्वेश्चन को ही समझिए. जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप उसका राइट आंसर भी लिख पाएंगे. नहीं तो अब लिखिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी. कहता है कि मीडिया एक डेमोक्रेसी में क्या करता है, इसको डिस्क्राइब हम लोगों को करना है. इज इट क्लियर? तो अब देखिए, क्वेश्चन हो गया, आंसर लिखिए. इन अ डेमोक्रेसी मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयर एंड इनलाइटेड सिटीजन. अब कहता है इन अ डेमोक्रेसी मीडिया प्लेज. लिखना शुरू करिए, सारे लोग लिखिए, ऑल ऑफ यू राइट, डू राइट. In a democracy, media plays an important role in creating aware and enlightened citizen. ENLIGHTENED. ENLIGHTENED. Enlightened citizens. Full stop. It also ensures, ENSURES. It also ensures that the political power, other parties, and powerful groups do not step beyond their limits. Do not step beyond their limits. Now again, describe the role of media in a democracy. Full stop. ये क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे क्योंकि डिस्क्राइब से शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क देने की जरूरत नहीं है. आंसर है, इन अ डेमोक्रेसी मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in creating aware and enlightened citizens. In creating aware and enlightened citizens. It also ensures that the political power, other parties, and powerful groups do not step beyond their limits. Describe the role of media in a democracy. This is the question number 3, E3. In a democracy, media plays an important role in creating aware and enlightened citizens. It also ensures that the political power, other parties, and powerful groups do not step beyond their limits. Or full stop. This is the answer of question number 3, E3. This is the answer of question number E3. Now E4. In what ways? Question लिखे सारे लोग. In what ways does the media bring the problems of common man to the forefront? Forefront का spelling FOREFRONT. 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 In what ways does the media bring the problem of common man to the forefront? और मतलब कहता है कि किस तरह से मीडिया कॉमन मैन के प्रॉब्लम को आगे ले आता है कि सारे लोग उसको देखें. तो अब इसको देखिए. अब जैसे सपोज करिए, इसके बारे में हम सिंपली आप लोग को बता देते हैं. मान लीजिए सपोज करिए कि पटना में कॉमन मैन का प्रॉब्लम क्या है. हमारा और आपका जो का प्रॉब्लम है, दैट इज नोन एज द कॉमन मैन. अब पटना में वाटर लॉगिंग होता है. कभी कभी हम लोग के घर में भी घुस जाता है, आपके भी घर में घुस जाता होगा, मेरे घर में तो घुसता है, समटाइम पानी आता है. तो अब वैसे में अब हम लोग को क्या, हम लोग मान लीजिए कि कोई बात कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि कहीं भी पटना में पानी नहीं लग रहा है, लेकिन अब मीडिया क्या करेगा, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो पर भी बोलेगा. तो अब मीडिया क्या करेगा, उसका जगह जगह से आप देखिएगा कि पटना का पिक्चर ये करेगा, डाउन पिक्चर को पब्लिश करेगा, टेलीविजन में दिखाएगा, और हम लोग उसको देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि देखो गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, या ऑफिशियल्स किस तरह से काम कर रहे हैं, पूरा पटना में पानी लगा हुआ है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन विच ऑल ऑफ वी आर फेसिंग. तो इसी को कैसे मीडिया आगे ले आता है, ये आंसर हम लोगों को लिखना है. अब देखिए, अब आंसर लिखिए. मीडिया प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल टू द फोरफ्रंट. मीडिया प्लेज a very crucial role. देखिए, media plays
a very crucial role in bringing the problems of common people to the forefront as it aware the government as it aware the government गवर्नमेंट के स्पेलिंग लिखिएगा तो आप लोग सारे मोस्ट टाइम चिल्ड्रन लिव्ड एन इन द गवर्नमेंट बट एन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ड गवर्नमेंट GOVERNMENT that is government. So please write N positively. Next, government about the issues faced by the common people. On a national platform. On a national platform. नेशनल प्लेटफॉर्म मतलब मीडिया अपने इस पे जोड़ती है और इसके आंसर को भी आप मैच करिए. क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज द मीडिया ब्रिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन टू द फोरफ्रंट. अब कहता है कि किस तरह से मीडिया जो है कॉमन मैन के प्रॉब्लम को आगे ले आता है. तो हम लोग लिखेंगे मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल. मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल in bringing the problems of common people to the forefront as it aware the government about the issues issues faced by common people faced by common people on a national platform. Question number 5, do you think Indian media is free? Justify your answer. कहता है कि क्या आप सोचते हैं कि इंडियन मीडिया फ्री है? If you are thinking Indian media is free, then justify, जो आप कह रहे हैं उसको justify करिए, बताइए. तो मेरा आंसर है yes. मेरा आंसर है यस. आपका भी आंसर यस ही होगा, बिकॉज वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी वांट टू गेट वी गेट फ्रॉम द इंडियन मीडिया, इसलिए इंडियन मीडिया फ्री है. बट डोंट राइट यस. आई थिंक सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे? यस. वी विल राइट यस. इंडियन मीडिया इज फ्री. लिखिए यस, इंडियन मीडिया इज फ्री बिकॉज yes, Indian media is free because in India media have full right, FULL, because in India media has full right to take a truth news from the country, because in India media have full right to take a truth news from the country and give it to the public. फ्यूचर क्वेश्चन को देखिए. डू यू थिंक इंडियन मीडिया इज justify your answer. Do you think? Yes, Indian media is free. Yes, Indian media is free because in India media have full right to take a truth news from the country and give it to the public. Do you think Indian media is free? Justify your answer. Question is this: do you think Indian media is free? Justify your answer. Yes.
free because in India, take a through news from the country and children start. Again, I'm going to. Who is, ma'am? Your voice is not clear. Oh, my voice is not clear. You are not. You are not getting my voice clear. My voice is not clear to all of you. Oh, again, I'm repeating the answer. This time, voice is clear or not clear? My voice is clear or not? You are listening me or? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। आ रही है। यस मैम, आपकी आवाज कट कट मैम के आ रही है। यस मैम, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही थी। मैम अच्छे से लिख भी नहीं पाई E45। फिर से बोलते हैं E4 E3 से धीरे धीरे बोलिएगा। कट के आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। एकदम धीरे धीरे बोलिएगा। ओके 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 ओके, म्यूट करते हैं तुम लोगों को। अब सुनना शुरू करो। E3, describe the role of media in a democracy. This is question. Describe the role of media in a democracy. Describe the role of media in a democracy. Describe the role of media in a democracy. Now, answer is, in a democracy, media plays an important role in creating aware and enlightened citizens. It also ensures, full stop, it also ensures that the political power, it also ensures that the political power other parties and powerful groups do not step beyond their limits. Full stop. This is the answer of E3. तो धीरे धीरे बोले हैं, मेरे ख्याल से आप लोग सुन रहे होंगे और लिखे भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E4. In what ways does the media bring the problems of common man to forefront? In what ways does the media bring the problems of common man to the forefront? Answer है, media plays a very crucial role in bringing the problems of common people to the forefront, as it aware the government about the issues faced by common people on a national platform. On a national platform. Question number 5. Do you think
Indian media is free? Do you think Indian media is free? Justify your answer. Do you think Indian media is free? Justify your answer. Answer लिखिए. Yes. Yes. Indian media is free. Yes. Indian media is free because yes, Indian media is free because in India, media have full, F-U-L-L, full right to take a truth news from the country and give it to the public. Now, लोकल डेमोक्रेसी में तो किसी को भी मैम पहले डेमोक्रेसी, मैम पहले गवर्नमेंट बोली थी ना मैम E5 में. मैम पहले आप गवर्नमेंट बोली थी, अभी कंट्री बोल रही हैं. अभी कंट्री बोल दी, फिर गवर्नमेंट भी आया था. अच्छा लिख लो एक बार, अगर बोले थे तो वो स्लिप हो गया होगा, एक बार देख लो, मिला लो, कंट्री ही होगा. देखिए, यस इंडियन मीडिया इज फ्री बिकॉज in India, sorry, not Indian, because in India, media have full right to take a truth news from and give it to the country का मतलब बताता है. ठीक है, लद्दाख के चाइना के बीच में जो है और हम लोग को दिखाया, तो इंडियन मीडिया फ्री है कि कहीं भी जा सकता है और कहीं से भी कोई न्यूज लाकर